एक्टिविटी हुई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप कृपया विराजमान हो जाएं। और अब CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप में जानकारी देते हुए एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। भारत, संस्कृति और विरासत की भूमि। संस्कृति और विरासत जो सदियों से भारत को एक सूत्र में बांधती आई है और इस सूत्र के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लगातार प्रगाढ़ बना रही है सबकी रेल, भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करते हुए भारतीय रेल लगातार हो रही है आधुनिक, तेज, सुरक्षित और समावेशी। और इसकी एक शानदार मिसाल है मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 170 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप की पहली रेल की साक्षी बनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हमारी ऐतिहासिक धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखते हुए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए CSMT की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इसी कड़ी में आज CSMT स्वदेशी और अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ की भी साक्षी बन रही है, जो विरासत के साथ विकास के संकल्प को और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र को एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, जो भारत की 9वीं एवं 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। मुंबई और सोलापुर के मध्य शुरू हो रही वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी विरासत CSMT को आस्था से जोड़ेगी और आस्था के धाम विट्ठल रुक्माई की नगरी पंढरपुर, तुलजा भवानी की नगरी तुलजापुर, अक्कलकोट स्वामी समर्थ और सोलापुर के सिद्धेश्वर इत्यादि तीर्थ स्थलों के दर्शन और सांस्कृतिक नगरी पुणे की यात्रा को बेहद सरल और बेहतर बनाएगी। आज ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस साईं बाबा के दर्शन को आसान और सुलभ बनाने के लिए मुंबई और साईनगर जनपद मैनपुरी एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, जो श्रद्धालुओं की पंचवटी, रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर की नगरी नासिक की यात्रा भी सरल, सुलभ और आरामदायक बनाएगी। लोनावला, खंडाला और कसारा घाट से गुजरते हुए वंदे भारत पर्यटकों को शानदार प्राकृतिक नजारे दिखाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस टच फ्री डोर्स, रिवॉल्विंग रिक्लाइनर सीट्स, GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना सिस्टम, ऑनबोर्ड वाईफाई, दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक कोच और कवच सुरक्षा सिस्टम जैसी कई सुविधाओं से सुसज्जित है। तेज गति से पटरी पर दौड़ती ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आनंद भगत के साथ ललन कुमार, कारोबारियों और पर्यटकों को रेल यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव देंगी। महाराष्ट्र को मिल रही डबल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें डबल इंजन सरकार की महाराष्ट्र के अनवरत और सर्वांगीण विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे। और अब सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड पर वकोला, कुर्ला और MTNL LBS उड्डान पुल के एलिवेटेड कॉरिडोर तथा
कुरार मलाड में वाहन भुयारी मार्ग का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। साथ ही इनके बारे में एक फिल्म चलेगी। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी और जीवन रेखा, प्रतिदिन विस्तार और प्रगति की ओर अग्रसर। इस वृद्धि में सहायता के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यात्रा के समय और यात्रा की भीड़ को कम करने वाली अधिक सड़कें बनाई जा सकें। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने MMRDA के मुंबई मेट्रो का उद्घाटन किया। उसके बाद बहुत कम समय में डबल इंजन सरकार के माध्यम से मुंबई के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2 और महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। उनमें से एक कुर्ला से वकोला तक और दूसरा MTNL जंक्शन से LBS फ्लाईओवर तक नया पूरा किया गया एलिवेटेड कॉरिडोर है। 8.6 मीटर की 2 लेन चौड़ाई के साथ 3 किलोमीटर लंबे इस पुल को 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से पहले कुर्ला और MTNL जंक्शन ट्रैफिक से भरे हुए थे। लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम और यात्रा में भारी देरी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उपनगरों में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी भी एक समस्या थी। ये कॉरिडोर SCLR डबल डेकर रेल ओवरब्रिज का पूरक है और इसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता है। ये पहले इस कॉरिडोर के बिना संभव नहीं था। इस कॉरिडोर के उपयोग से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाने वाले लोगों के समय में 20 मिनट की बचत होगी। MTNL जंक्शन से LBS फ्लाईओवर जाने वाले लोगों के समय के 10 मिनट बचेंगे और ये MTNL जंक्शन पर भी भीड़ को कम करके आवागमन आसान करेगा। BKC का व्यापारिक जिला इन कॉरिडोर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। छात्र समुदाय और दैनिक यात्रियों के समय की बचत होगी, जिसका उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उपनगरों में यातायात को आसान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन की जा रही अन्य महत्वपूर्ण मुख्य सड़क मलाड में कुरार विलेज सबवे है। कुरार में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दोनों ओर के लोगों को दूसरी ओर पहुंचने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ दूरी तय करनी पड़ती थी। कुरार अंडरपास इस ट्रैफिक को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दूर ले जाएगा और आवागमन को आसान करेगा। 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई के साथ इस सबवे में 7.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे सड़क और दोनों तरफ 2.25 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी शामिल है। ये 2 नई परियोजनाएं कुरार सबवे और SCLR एलिवेटेड कॉरिडोर डबल इंजन 22 को तत्कालीन हर मुंबई कर के यातायात को सुखद बनाने के निरंतर वादे के अच्छे उदाहरण हैं। चित्र के आमतल्ला गांव के पास ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें SP सहित सभी पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमेशा देवी और सज्जनों, साईं बाबा के दर्शन हेतु उनके अनगिनत भक्तों के लिए भारतीय रेल का उपहार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और साईनगर शिरडी के बीच चलने वाली देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शुभारंभीय सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, साईनगर शिरडी जाने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से लेकर साईनगर शिरडी के बीच चलने वाली देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो चुका है। मुंबई से शिरडी पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन लेकर उसी दिन वापसी की ये सुविधाजनक यात्रा विशेषता ये है कि घाट सेक्शन में इस गाड़ी को एक्स्ट्रा इंजन लगाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। प्रगति की जीवन रेखा, विरासत के साथ विकास, ये कहना निश्चित ही उचित होगा। देश की
सबसे एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वंदे भारत गाड़ियों में इस्तेमाल की गई है। अत्यंत आरामदायी ऐसी ये यात्रा होगी, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम आश्वासित हैं। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि आज तक जो 8 वंदे भारत गाड़ियां भारत में चल रही थी, वे एक राज्य से शुरू होकर दूसरे राज्य जाती थी, पर आज ये 2 ट्रेन्स जो मुंबई से चली हैं, वे महाराष्ट्र के एक शहर से शुरू होकर महाराष्ट्र के ही दूसरे शहर में पहुंचेगी और वहां से वापस आएगी। ये बहुत ही अनोखा पल है, महाराष्ट्र के लिए बड़ी सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा अविस्मरणीय अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रेल्वेच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती होते। देशाला आज 9वी आणि 10वी वंदे भारत ट्रेन समर्पित करताना मला अत्यंत आनंद होतो आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, महाराष्ट्र के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के लिए, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। ये वंदे भारत ट्रेनें मुंबई और पुणे जैसे देश के आर्थिक सेंटर्स को हमारे आस्था के बड़े केंद्रों से जोड़ेंगी। इससे कॉलेज आने जाने वाले, ऑफिस और बिजनेस के लिए आने जाने वाले, किसानों और श्रद्धालुओं सभी को सुविधा होगी। ये महाराष्ट्र में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत अधिक बढ़ावा देने वाली है। शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करना हो, नासिक स्थित रामकुंड जाना हो, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी क्षेत्र का दर्शन करना हो, नई वंदे भारत ट्रेन, ये सब बहुत आसान होने वाला है। इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, भाकपा जिला मंत्री या फिर आई तुलजा भवानी के की दर्शन सांसद एवं अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। और मुझे पता है कि जब वंदे भारत ट्रेन सह्याद्री घाट से गुजरी थी
तो लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का कितना दिव्य अनुभव होने वाला है। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इन नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की बहुत ही शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड, भारत के स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से देश वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहा है। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। एक क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था, इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। मैं मुंबईकरों को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विशेष बधाई दूंगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को बहुत तेजी से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना ही होगा। जितनी तेजी से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिक बनेगा, उतना ही देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुखद सुधार होगा। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो देश का बजट आया, उसमें भी इसी भावना को सशक्त किया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी भरपूर तारीफ भी की। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया गया हर रुपया नए रोजगार की संभावनाएं बनाता है। इस पे जो सीमेंट लगता है, बालू लगता है,
लोहा लगता है, निर्माण में मशीनें लगती हैं, इनसे जुड़ी हर इंडस्ट्री को बल मिलता है। इससे बिजनेस करने वाले मिडिल क्लास को भी लाभ होता है, गरीब को रोजगार मिलता है। इससे इंजीनियरों को रोजगार मिलता है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब भी सबकी कमाई होती है, और जब तैयार होता है तो वो नए उद्योगों, नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। भाई और बहनों, इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को कैसे मजबूती दी गई है, इस बारे में मैं मुंबई के लोगों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। चाहे सैलरीड क्लास हो या व्यापार कारोबार से कमाने वाला मध्यम वर्ग, दोनों को इस बजट ने खुश किया है। आप देखिए 2014 से पहले तक क्या हाल था। जो भी व्यक्ति साल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमाता था उस पर टैक्स लग जाता था। भाजपा सरकार ने पहले 5 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स में छूट दी, और इस बजट में इसे 7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। आज जिस कमाई पर मिडिल क्लास परिवार का टैक्स 0 है, उस पर यूपीए सरकार 20% टैक्स लेती थी। अब ये युवा साथी जिनकी नई नई नौकरी लगी है, जिनकी मासिक आय 60-65 हजार रुपए तक की है, वे अब ज्यादा निवेश कर पाएंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार ऐसे ही निर्णय लेती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि सबका विकास से सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने वाला ये बजट हर परिवार को ताकत देगा, हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। फिर एक बार मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को बजट और नई ट्रेनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथिगण का, हमारे सभी इन्वेस्टर्स का, ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में। एक ऐसे प्रदेश में और एक ऐसे समिट में जहां पर आपके सपने मिलेंगे विकास से, जहां पर आपके व्यवसाय को मिलेगी एक नई गति, एक नई रफ्तार, और जहां पर आपके निवेश को यकीनन मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देवियों सज्जनों, यह एक्सप्रेस प्रदेश है, अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, और इस गतिशील प्रदेश में आप सभी का सरकार की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को, नंदी जी को, जिनकी देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो अथक प्रयास करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ। तालियों के साथ स्वागत है श्री नंद गोपाल गुप्ता जी का, जिन्हें हम लोकप्रिय रूप से नंदी के नाम से जानते हैं। उनसे निवेदन उनके स्वागत संबोधन के लिए।
सर्वप्रथम निवेश के महाकुंभ एवं उत्तर प्रदेश की समृद्धि के महाउत्सव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन के कार्यक्रम में जनसेवा, सुशासन और अपनी विजनरी दृष्टि से वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हम सबके अगुआ, प्रेरणा स्रोत्र, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की प्रतीक, हम सब की अभिभावक, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक स्वाभिमान एवं आर्थिक उन्नति को नई ऊंचाई देने वाले, नई ऊंचाई देने के लिए सतत समर्पित 25 करोड़ प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए रात दिन काम करने वाले प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, सभापति कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, संयुक्त अरब अमीरात एवं डेनमार्क के माननीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी सहयोगी माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, IIDC श्री अरविंद कुमार जी, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों का, देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए सम्मानित डेलीगेट्स, सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब का परम सौभाग्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हो रहा है। पूरा भारतवर्ष इस उपलब्धि से गदगद है। सभी के मन में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ही भाव उठता है कि मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, मोदी जी की रूह में जज्बा है जब ईमान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का, क्यों न फिर डंका बजे दुनिया में हिंदुस्तान का। अभी हाल ही में अमृतकाल का पहला बजट, जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया। ऐसे स्वर्णिम कालखंड में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे आयोजन की मेजबानी का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है जो भारत की आत्मा के मौलिक विचार वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली सहित 10 देशों के सम्मानित प्रतिनिधि पार्टनर कंट्री के रूप में उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में आपकी वैश्विक सोच की प्रेरणा समाहित है। GIS में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, देश के सभी बड़े महानगरों में, दुनिया के 16 देशों और 21 सिटीज में रोड शो के आयोजन हुए। इस मुहिम से लोकल से लेकर ग्लोबल तक के वास्तविक मंत्र को धरातल पर उतारा गया है। यही कारण है लाखों करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। इस समिट को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। GIS के महामंच से हम विकास की नई संभावनाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूरगामी दृष्टि एवं सही दिशा वाली डबल इंजन की सरकार के कारण हम सब आज इस विराट आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, जहां एक ओर अयोध्या, काशी, मथुरा की दिव्यता, प्रयाग का महाकुंभ दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वालों को गदगद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस कॉरिडोर, डाटा सेंटर, जेवर एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, फार्मा पार्क, फिल्म सिटी जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं से इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी को भी उत्तरोत्तर नई ऊंचाई मिल रही है। हम सांस्कृतिक विकास और आर्थिक तरक्की दोनों ही मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनियों के
आगमन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। चाक चौबंद कानून व्यवस्था, निवेशकों के हित की सुरक्षा, इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम, समयबद्ध एवं जवाबदेह कार्य प्रणाली के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सुचारू नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई रफ्तार मिली है। यही कारण है जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अछूते रहते थे, आज इंडस्ट्रियल हब बनकर उभर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की यात्रा में अविस्मरणीय अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के महामार्ग पर ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पंडाल में मौजूद प्रत्येक निवेशक का संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समृद्धि की यात्रा में सहभागी बनने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए कोटि कोटि आभार करते हुए आपके लिए इस पंडाल में मौजूद एक एक व्यक्ति के हृदय की भावना को 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मोदी जी के पास है जागीर जब ईमान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की, मुस्कुराए फिर न क्यों तस्वीर हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, 2017 के बाद से विकास की राह पर चलता हुआ ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। राज्य वही है, संसाधन वही है, काम करने वाले लोग भी वही हैं, पर नए नेतृत्व में नई सोच के साथ, पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ ये समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित उत्तर प्रदेश है, जो अब भविष्य के द्वार पर दस्तक देते हुए आप सभी का आह्वान कर रहा है कि आप नवीन और शक्तिशाली भारत के निर्माण में, नवीन उत्तर प्रदेश के विकास गाथा में शामिल हो। और इसके द्वार आप सभी के लिए खोलते हुए, आप सभी को इसके विकास पथ पर आमंत्रित करते हुए, मैं हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। व्यवस्थित रखरखाव को करने के लिए निर्देशित किया।
infrastructure, enabling policy framework, business-friendly governance. These are the four elements propelling Uttar Pradesh towards a global takeoff, making it New India's growth engine. Following the growth principles laid down by India's visionary Prime Minister Shri Narendra Modi, Uttar Pradesh is on its way to becoming the most preferred investment destination for global investors and industrialists. One of the fastest growing Indian states, UP ranks high in ease of doing business with zero tolerance policy against crime and corruption. Known for its cultural vibrance, value system and 250 million populace, UP is not only India's single largest consumer market, but also a bountiful supplier of skilled human resources. The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy and textiles manufacturing sectors. With 96 lakh MSMEs, Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहाँ की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective multimodal logistics solutions for the movement of manufactured goods around the global market and eco-tourism businesses. World-class, power-rich infrastructure with 9 operational and 10 upcoming airports, 4-lane interstate highways and the futuristic rapid rail transport system shall make every nook and corner of the state easily accessible for the world, thus opening up entire state for investment, including the Purvanchal and Bundelkhand areas. To ensure an investor-friendly ecosystem based on transparency and trust, the government of Uttar Pradesh has come up with Invest UP 2.0, a comprehensive investor services framework under which a single window MOU monitoring portal, Nivesh Sarathi, has been developed to provide one-stop solutions for investors. The state government has formulated New Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022 and more than 25 sectoral policies to attract investments in various focus sectors. Catapult the state towards becoming a $1 trillion economy, we followed a global to local approach. After thorough consultation with all stakeholders, the newly formed policies were showcased internationally, then nationally, and then to the existing domestic investors within UP, generating immense global investor interest. Today, the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 brings together policymakers, corporate leaders, business delegations, academia, think tanks, and leaders from across the globe
to collectively explore business opportunities and forge global investment ties in Uttar Pradesh. Opportunities shall also spike employment opportunities for the state's young and skilled workforce. As India enters its Amrit Kaal, the golden period of independence, the government of Uttar Pradesh, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ensures you all of the most conducive business environment and a vibrant ecosystem for sustainable growth that shall play a pivotal role in India's journey to become a $5 trillion economy. Come aboard on our global takeoff to become the most favored business destination. उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। Uttar Pradesh, new India's growth engine. ये नया उत्तर प्रदेश है विकास की राह पर चलता हुआ, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहेंगे जो बहुत सटीक बैठती हैं उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। तो अभी तो नए उत्तर प्रदेश का सूरज उगा है, और यकीनन आप सभी के साथ प्रयास के साथ और विश्वास के साथ ये और अलौकिक होगा और प्रकाशमय होगा। और इसी साथ और सहयोग की मनोकामना के साथ अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे लीडिंग इन्वेस्टर्स के विचारों को। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला जी को, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप। उन्हें तालियों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मंच पर स्वागत करते हैं। आप जानते होंगे कि 2023 में अभी हाल ही में उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया गया है। इनवाइटिंग डॉक्टर कुमार मंगलम बिरला जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of UP Srimati Anandiben, distinguished ministers, government officials, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here today joining the Global Investor Summit here amongst both Indian and leading investors from across the globe. We are meeting against the backdrop of a moment of remarkable change and unbridled possibilities in India. As you are all aware, India is now the fastest growing large economy in the world and is poised to become the third largest economy in the world by 2030. As a global business group, we operate in 36 countries, and I can confidently say that India today stands out amongst all of them. There is perhaps no other country in the world that combines robust democracy, transformational governance, economic might, demographic dynamism, and entrepreneurial energy. From renewables to digital governance and space tech to agri-innovation, India is emerging as a truly global champion. And for that, one man deserves much of the credit. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, जिन पर 140 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है. Our Prime Minister has energized each one of us, to say the very least, with his vision for our nation's Amrit Kaal, a glorious period of sustained growth and prosperity, one where our actions will be in harmony with the universe. मुझे विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारी यानी इंडिया की प्रगति वैश्विक समृद्धि का एक नींव होगी.
And at the heart of this Indian story is, of course, Uttar Pradesh. The Aditya Birla Group shares a deep bond with Uttar Pradesh. About 500 kilometers from here at Renukut, our metals flagship company, Hindalco, took roots way back in the 1950s. Since then, our operations there have grown multifold, and we have also expanded our presence into many other sectors in the state. For example, cement, chlor-alkali chemicals, fashion retail, financial services, and carbon black, to name a few. Today, 7 of our group businesses have a significant presence in Uttar Pradesh, anchored by over 30,000 people across our operations in the state. Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. The scale of infrastructure projects and their pace of implementation here are both remarkable. Be it the state-of-the-art highway projects crisscrossing the length and breadth of the state, the metro rail projects or the new airports, the state is upgrading its infrastructure in a transformative way. The government has also made significant strides in terms of ease of doing business. It was ranked second in the ease of doing business survey of the central government. Its Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has won huge appreciation from investors. To further build upon its attractiveness for investors, the Uttar Pradesh government has recently launched a new industrial investment and employment promotion policy that targets making the state a $1 trillion economy. Investors are already taking note of the changing face of Uttar Pradesh. In the 3 years ending September 2022, the state has attracted FDI worth $1.1 billion, which is more than what it has attracted over the first 2 decades of this century. When it comes to building new age infrastructure or providing efficient governance, Uttar Pradesh is creating an example for other states to follow. In the process, it is creating immense opportunities for investors both in India and abroad. As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress that the state is making. Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses, cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. And we are truly excited to be a part of this journey. Thank you. Thank you, sir, for sharing with us the impressive footprints which you have casted here and the further futuristic plans you have. And now, ladies and gentlemen, inviting another iconic business leader, Chairman Reliance Industries, Shri Mukesh Ambani ji, who has in fact been leading various game-changing ventures in the country. Shri Mukesh Ambani, Chairman Reliance Industries.
Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Srimati Anandiben Patel, respected Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, respected Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, distinguished dignitaries, my esteemed friends from industry and business, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by a laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator, because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी is also blessed
with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector, and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, कानपुर Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hardworking kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा. हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे. इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा. Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP Ji Jaan se, and we always back our words with action. When I last visited the summit in 2018, Reliance was just beginning its journey in Uttar Pradesh, and I had committed to Yogi Ji that Reliance would be a reliable partner to Uttar Pradesh. True to our word, from that day till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. Our businesses have not only been growth multipliers, as they enable several sectors of the economy to grow, but also employment multipliers. Our investments have generated over 80,000 direct and indirect jobs in the state. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across Jio, retail, and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है. सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. I wish this summit and the state all the success. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद
साथ उत्तर प्रदेश की उन्नति और प्रगति में और अपना सहयोग देने का। और अब देवीय सज्जनों, आमंत्रित करते हैं हमारे अगले आइकॉनिक बिजनेस लीडर को, जिन्हें लोग पॉपुलरली मैराथन मैन के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सुशोभित किया गया था और जो देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं, चेयरमैन टाटा सन्स श्री एन चंद्रशेखरन जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Anandiben ji, respected Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath ji, respected Defence Minister of India Rajnath Singh ji, ministers from the Government of Uttar Pradesh, officers of the government, fellow businessmen, all delegates, friends from media. It is a great privilege and honor to be here at the Global Investor Summit 2023 of Uttar Pradesh and share a few thoughts. India, under the strong visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has achieved a position where we are going to see India being the fastest growing economy, not only in the current year, I'm pretty sure in the coming years of the decade. It is not only about economic growth. What the Honorable Prime Minister has enabled is a 360-degree development. That is because there is a confidence and aspiration in every Indian, in every nook and corner of the country. So we are seeing economic development, development in quality of life, development in sports, arts, and across the board, you see it exhibiting itself in terms of the aspiration and want to achieve more everywhere. From an economy point of view, India's dream of becoming a $5 trillion economy, 10 trillion, and again 25 trillion when we become 100 years after independence is very much achievable, and we are well on our path. And we have started the Amrit Kaal with the first budget, which I would say lays a very strong foundation, because we are seeing a tremendous investment towards infrastructure development and also policies that will promote huge consumption. I feel we are in a situation where we are going to see growth led by infrastructure as well as consumption. We are going to see rural growth as well as urban growth, domestic growth as well as exports growth. It is a very unique situation because this has not happened. Usually one thing or the other will pull us down. I think we are in a unique situation. The world is going through three fundamental transitions: digital artificial intelligence transition, energy transition, and transition towards building a global value chain to meet the supply chain demands of the world. I would say India
is very uniquely positioned to not only participate but lead in all the three dimensions. I will take a minute. On the AI and digital transition, we are very uniquely placed because of three reasons. One, India has adopted digital in a very unique way to solve problems at scale, both in public services delivery as well as in the private sector. Second, we have a most successful IT industry which has enormous capability. And third, we have a talent pool which is very unparalleled. So we are very uniquely positioned towards this transition, not only for India but for the world. Second, in energy transition, we will be the only nation which will be adding significant capacity of energy, more than twice or thrice of what we have today in the next 2 decades. With this kind of a growth, transition becomes easier. The transition is not a substitution, transition becomes a growth engine. And third, in terms of the global supply chain, again, the government policies, whether it is the PLI schemes or simply the vision of the Prime Minister to take India to be a leader in the most important sectors of the future, is going to drive a huge amount of investment, capability building, and ecosystem development, which is all going to lead into enormous amount of growth domestically and most importantly globally from an export point of view. Coming specifically to Uttar Pradesh, Uttar Pradesh is already the third largest state in the country, and from the current 225-230 billion, it is absolutely well placed to capitalize on the trends and become a $1 trillion economy when India will be a $5 trillion, and again become a $2 trillion economy by the time India reaches 10 trillion. There are 3 or 4 sectors which are very suitably placed. One is agriculture. Already UP has a very strong presence. It is the largest producer of oilseeds. It's among the top 3 in terms of wheat, sugarcane, fruits, vegetables, and pulses. And it is so uniquely advantageous that 87% of the sown area is fully irrigated, which is significantly higher than the national average of 50%. By applying the technology of the modern industrial era, UP can dramatically increase productivity in its agricultural sector. The manufacturing sector presents another opportunity because UP is much below the national average or below the other states. UP only gets 12% contribution from this sector. With the tremendous focus on infrastructure development and the value chain opportunity that is presented globally, UP has a fantastic opportunity to increase its share from manufacturing by focusing on advanced manufacturing, precision electronics, semiconductors, assembly and testing, defense and aerospace, pharmaceuticals. All of this are going to happen in this coming decade, and UP
with its vast land and progressive policies and infrastructure, can capitalize. Third area is tourism. Already UP is the largest in terms of attracting foreign visitors. Close to 5 million tourists from abroad visit UP. UP is most uniquely positioned because of its history, because of the UNESCO heritage sites, 24 wildlife sanctuaries, and Varanasi, the Jyotirling, and a number of religious places which are of huge significance both for domestic tourists and for international tourists. The tourism opportunity in UP is unparalleled to any other place. So these three growth engines can significantly contribute to Uttar Pradesh's dream of becoming $1 trillion economy, and in the process can address a lot of jobs and address quality of life, as well as bring down the inequality that exists between the different 75 states and bring a range which is much closer, where the per capita income and quality of life can lift all people in the state of Uttar Pradesh. A few words on Tata Group. Tata Group has a long history of presence in the state, from our steel company to automotive company, and a large presence of TCS, and all our retail companies, financial services companies, Tata Advanced Systems, Tata Power. 18 companies of the state of the Tata Group are deeply present. And today, more than 50,000 people work in the state of Uttar Pradesh. We are on a huge expansion across all our companies in the state. Our hotel business sees tremendous opportunities in the state because of the tourism that's going to come, both religious tourism as well as wildlife and other aspects that will attract tourists. Air India has a detailed plan to connect every part of UP to the rest of India and potentially to the important destinations of the world. And we are already having huge investments in Noida, both from a TCS point of view and also from Air India point of view. And I'm happy to say that we are going to build an integrated multimodal air cargo through Air India sets with our partner Zurich Airport in the new Jawahar Airport. So the group is very committed and sees a tremendous opportunity, and I want to express our gratitude to the phenomenal leadership that is being provided by the Honorable Chief Minister under the vision of our Prime Minister for clean governance, huge infrastructure development, as well as an atmosphere which is so much business friendly. I wish the summit a grand success, and thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir, for your commitments for UP. और देवी सजनों, हिंदुस्तान का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में जेवर में बनने जा रहा है, और इससे उत्तर भारत का ये प्रवेश द्वार साबित होगा और साथ साथ ये उत्तर प्रदेश को ग्रोथ सेंटर के रूप में स्थापित करेगा। इसका निर्माण किया जा रहा है ज़ूरिक एयरपोर्ट एशिया के द्वारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। हमारे साथ श्री डैनियल बर्चर हैं, CEO ज़ूरिक एयरपोर्ट एशिया। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। I request and invite Shri Daniel Bircher, the CEO of Zurich Airport Asia, to kindly address this august gathering.
Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Defence Minister, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Governor of UP, Madam ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Member of Union Cabinet Ministers, Member of the Cabinet of Ministers of the Uttar Pradesh Government, Members of the Parliament and Members of the Uttar Pradesh Vidhan Parishad and Vidhan Sabha, friends and colleagues from the corporate world, members of the media, and ladies and gentlemen. It is indeed a great honor to be here and addressing this august gathering today. Zurich Airport has been a long-standing partner with India. Having developed and built Bengaluru Airport almost 2 decades ago, we have assessed many other projects along the way, and today we are well on course to deliver a new gateway for Uttar Pradesh, the Noida International Airport. Alongside India, Zurich Airport will celebrate its 75th anniversary this year. And we are putting together all our years of experience and our global expertise spanning across 3 continents into making the Noida International Airport an aviation landmark of which the state of UP and the nation can be proud. I would like to congratulate the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister for the world-class infrastructure that they have developed for the state of Uttar Pradesh. No state has perhaps done as much as UP in recent years to encourage investment in the state. The fact that the who is who of the Indian entrepreneurs and global investors are present here today is a testament to this. Our own experience in the state of Uttar Pradesh has been nothing short of excellent. We are one of the largest foreign investors in the state today, and it's not just our investment. Noida International Airport is accelerating investments from world-class partners, be it for the development of a fuel farm, for a multimodal cargo hub together with the Tata Group, an airport hotel, catering facilities, and this is just the beginning. Noida International Airport will be a lighthouse project that will pave the way for greater investments in the state. An airport is not just a place where one catches flights. As we have seen across the world, airports are catalysts for economic growth and job creation in the surrounding areas. This project will therefore also support Western UP's development into a hub for manufacturing and commerce and create thousands of employment opportunities. One of the goals declared by the Honorable Prime Minister at the unveiling of the National Logistics Policy is to bring down the cost of logistics from the present 13 to 14% to single digits. The upcoming multimodal cargo hub at Noida Airport will be a big contributor in bringing down logistic costs for the region. Alongside that, it will help to stimulate growth in trade and manufacturing in the state of Uttar Pradesh. The Honorable Chief Minister, Shri Yogi Adityanath ji, has been the driving force behind the development of Noida International Airport. Not only did he and his government ensure smooth land acquisition and pave the way for speedy clearances, but he and his administration had the wisdom and foresight to plan for tomorrow. When it opens next year, Noida International Airport will have direct access to the Yamuna Expressway. There will be separate and independent road access to the airport's east, allowing for the smooth and unrestricted transport of freight. And the airport terminal will in turn have their own metro and high-speed rail stations, providing a smooth experience for passengers. Looking beyond that, the government of UP has begun to acquire land to the north and to the south of the current airport site,
providing for future airport growth and development in the decades to come. With the support and the encouragement of the state government, we are proud to say that we see ourselves not just as financial investors in the state of Uttar Pradesh, but as partners in its progress. Noida International Airport is a shining example of a public-private partnership in action, and we are delighted to have the government of Uttar Pradesh as public partners. Together, we will be developing a world-class airport in Noida, a modern, digitally enabled airport that will not only be welcoming and easy to use, but also sustainable. An airport that is very much at home in Western Uttar Pradesh and reflects the region's rich architectural heritage. Noida International Airport will be a true blend of Swiss efficiency and Indian hospitality. On behalf of Zurich Airport, I take this opportunity to thank you, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, for your support, your encouragement, your partnership. Honorable dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, I look forward to welcoming you as our guests and our partners at Noida International Airport in 2024. Dhanyavad. Thank you, sir, for your expression of faith and confidence in UP, and thank you for your support. और देवी सजनों, भारत का 60% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और 55% मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होता है, और उसकी तरफ लीडिंग कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। उनके चेयरमैन डिक्सन टेक्नोलॉजी श्री सुनील वच्छानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इस सभागार को संबोधित करने के लिए। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Governor Ms. Patel, Ministers from Denmark and UAE and other ministers from UP. On behalf of Dixon and the mobile manufacturing industry, it's my proud privilege to talk to you about a journey in UP. This journey started with just a single factory for manufacturing televisions. And in a very short period of time, I'm very happy to say that now Dixon has almost 8 state-of-the-art factories in UP, employing more than 10,000 people and manufacturing a wide range of products, which includes televisions, mobile phones, LED lighting, and many other products. I think it's not only for Dixon that UP has become the #1 state. You just heard that almost 65% of the mobiles sold in the country are manufactured in UP. Almost 40% of LED lighting products which are sold in the country are manufactured in UP. And this is a story for many, many other electronics and consumer electronic products. And I must say that this would not have been possible for the very proactive and dynamic policies of the UP government under the leadership of our Chief Minister. We at Dixon are very happy to announce on the Investor Summit that we are opening 3 more centers of excellence for manufacturing in the state. The first for manufacturing consumer and telecom products, which will not only be made in India, but they'll be designed in India for the world.
a factory for manufacturing smartwatches, wearables and hearables. Again, designed in the state and manufactured in the state for the world. And finally, India's single largest factory for manufacturing refrigerators, almost 1.2 million refrigerators a year in Greater Noida. Once these factories are operational, they'll create job opportunities of almost 10,000 people. Finally, just to reflect of the mood in the industry, I think there is huge optimism and positivity in the industry today. There was a time when India was importing almost all its requirements for electronics into the country. And you'll be very happy to know it's a proud moment that out of the total requirement of $120 billion of consumption of electronic items, it's probably for the first time that 80 billion will be manufactured in the country. Let's look at the story of mobile phone manufacturing. There was a time we were importing almost 90% of our requirement that was consumed in the country. Today, we are not only manufacturing the entire requirement, but we're looking at exporting almost $100 billion worth of mobile phones. There was a time there were no Indian champions in the electronic manufacturing space. Today, Indian companies are manufacturing and exporting to all over the world. I must say that this would not have been possible without the clarion call made by our Honorable Prime Minister when he said, let's make in India. Let's make India the next hub for manufacturing of electronic products. Honorable Prime Minister, I would like to assure you that we in the industry will not rest until we make India the next hub for manufacturing of these products. Finally, I'd like to end with a couplet which I think reflects the mood in the nation and the industry. And it says, अभी जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है जमीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है. Thank you so much. इस उड़ान की तरफ आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंकिंग ऑल आवर इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर बीइंग आवर पार्टनर्स इन सक्सेस. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, भारत आज सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और एक ऐसा क्षेत्र है अब डिफेंस का क्षेत्र. आप जानते होंगे कि भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में. और इन कॉरिडोर्स के बनने से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, हमारा आयात कम होगा और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी भारत विश्व के मानचित्र पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा. हमारे साथ हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी हैं श्री राजनाथ सिंह जी. सभी की तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए. अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूएई और डेनमार्क के ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री मुकेश अंबानी जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री चंद्रशेखरन जी और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे यहाँ मौजूद स्टॉलवर्ड्स और बिजनेस जगत के अन्य प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित
देवियों व सज्जनों एवं मेरे मीडिया के मित्रों, यह हम सभी के लिए बेहद हर्ष की बात है कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है, वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज राष्ट्र के कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है, तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री, भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्राचीन काल में यह देश जिन जिन चीजों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध था, यहाँ का उद्योग और व्यापार भी उनमें से एक था। पर कुछ ऐतिहासिक कारणों के चलते यहाँ का उद्योग और व्यापार गर्त में जाने लगा। इस देश ने ऐसा भी समय देखा है जब तमाम संसाधनों और उपयुक्त परिस्थितियों के बावजूद लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से हिचकिचाने लगे थे। यानी स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया,